Dear friends, let us see the new topic, that is UV visible transition in alpha beta unsaturated carbonyl compound. So what are the types of transition takes place in alpha beta unsaturated carbonyl compound? There are two types of transition. Takes place. First one is pi to pi star transition, second one is n to pi star transition. You can see here it is pi to pi star transition and the second one is n to pi star transition. This pi to pi star transition is high energy transition, n to pi star transition is low energy transition. So whichever involve less energy shows high absorption wavelength, isn't it? So n to pi star. So one of the electron, let you see here first pi to pi star, one of the electron from pi bonding molecular orbital excited to or get promoted to the higher energy level antibonding pi star orbital. So pi to pi star transition takes place. One of the electron from pi bonding molecular orbital undergo transition to pi star antibonding molecular orbital. So we can say pi to pi star transition, and see the energy which is very much high as compared to n to pi star, and therefore absorption wavelength is less. Now you can say this is a non-bonding orbital, and one of the electron from this non-bonding orbital get promoted to pi star antibonding orbital, and so you can say that n to pi star transition. So n to pi star transition है और pi to pi star transition है. n to pi star transition में एनर्जी कैसी है, लेस है एज कम्पेयर टू दिस वन. सो इसका एब्सॉर्प्शन वेवलेंथ कैसे रहेगा, ज़्यादा रहेगा. दैट मीन्स मोर द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स, लेस द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स. व्हाई इट इज सो? स्टिल इट इज फॉरबिडन कंपाउंड बिकॉज द इंटेंसिटी इज वेरी वीक. अब ये हमने कैसे देखना है, लेट यू सी हियर व्हाई इट इज सो. यू कैन सी हियर पाई बॉन्डिंग इन इथेनॉल. You can see here this is what alkene and this is a carbonyl group molecular orbital energy level diagram. Now alpha beta unsaturated compound is nothing but the summation of this ethylene and this carbonyl compound. You can see here it is, isn't it? So this is pi bonding molecular orbital of ethylene, this is pi star antibonding molecular orbital of ethylene. You can see here carbonyl compound with the pi bonding molecular orbital and pi star antibonding molecular orbital. So whenever these two molecules combine together, it forms alpha beta unsaturated carbonyl compound. This is alpha position, this is beta. So alpha beta unsaturated carbonyl compound. So pi 1 and pi 2, because it is accommodated one electron from this carbonyl and other one from this ethylene. What you can have here, it is a pair of electron, pi 1 bonding molecular orbital, one of the electron from ethylene and second one is from carbonyl. So what you can have, pi 2 bonding molecular orbital. यहाँ पे pair of electron चाहिए, isn't it? यहाँ पे pair of electron चाहिए. You have to keep in mind this. Now you can see here it is one of the electron from ethylene and one of the electron from this carbonyl. There is a pair of electron from pi 1 bonding molecular orbital. Second one electron from ethylene and second one from carbonyl. There is bonding molecular orbital pi to pi star. Likewise here it is a pi 3 star anti-bonding molecular orbital of alpha beta unsaturated carbonyl compound, and pi star 4 or pi 4 star is anti-bonding molecular orbital corresponding to pi 2, and pi 3 star is the anti-bonding molecular orbital corresponding to pi 1, isn't it? Now you can see here whenever it is alpha beta unsaturated compound when irradiated with the UV visible light, and what you can have here, one of the electron from here pi 2 bonding molecular orbital undergo excitation. What it is? Undergo transition from pi 2 bonding molecular orbital to pi 3 star bonding molecular orbital. अब ये कौन सा है? अल्फा बीटा अनसैचुरेशन. कार्बोनाइल में कहाँ पे है? ये पाई टू पाई स्टार, isn't it? इथिलीन में ये पाई टू पाई स्टार. तो ये एनर्जी देखिए, ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इन कार्बोनाइल एंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड. ये एनर्जी कैसी हो रही है यहाँ पे? लेस. ये एनर्जी कैसी है? बहुत ज़्यादा है. इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी फॉर ट्रांजिशन. वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग. यहाँ पे पाई टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, ये एनर्जी कैसी हो रही है? लेस हो गई है. सो देयरफॉर द एब्सॉर्प्शन वेवलेंथ कैसी रहेगी? ज़्यादा रहेगी. लेस एनर्जी, एब्सॉर्प्शन वेवलेंथ इज मोर. So simple carbonyl में pi to pi star energy is more and alpha beta unsaturated carbonyl compound में pi to pi star energy is less, and therefore it shows
maximum absorption wavelength than pi to pi star in carbonyl. Likewise, here it is n to pi star transition. One of the electron from non-bonding undergo excitation to anti-bonding pi 3 anti-bonding molecular orbital, and what you can have here it is n to pi star transition. यहाँ पे देखिए n to pi star transition एनर्जी कैसी है, ज़्यादा है, यहाँ पे कैसी है और भी कम है, सो एब्सॉर्प्शन वेवलेंथ कैसी रहेगी और ज़्यादा रहेगी, इजंट इट? सो n to pi star ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन है क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत वीक होती है, सो ये pi to pi star ट्रांजिशन इज वेरी सिग्निफिकेंट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर. सो देयरफॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में अब कंक्लूजन क्या है हमारा, इन कार्बोनाइल pi to pi star transition is high energy transition, shows less lambda max, that is absorption wavelength, but in alpha beta unsaturated carbonyl compound pi to pi star transition is having very less energy, and therefore it shows maximum absorption wavelength and very significant in determining the structure of अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड. अगर यहाँ पे और एक कॉन्जुगेशन अगर ऐड होगा तो ये एनर्जी गैप और कम हो जाएगा. जैसे एज नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस एनर्जी गैप डिक्रीजेस एंड देयरफॉर एब्सॉर्प्शन वेवलेंथ इंक्रीजेस. ठीक है, फिर से मैं बता दूं, अगर यहाँ पे कॉन्जुगेशन और बढ़ जाएगा तो ये एनर्जी गैप कैसे कम हो जाएगा, अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो एब्सॉर्प्शन वेवलेंथ बढ़ जाएगी, इजंट इट?